जय जगन्नाथ फ्रेंड्स दिस बासुदेव पंडा वेलकम टू मास्टर इंग्लिश पे बायोलॉजी पिलाମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବାୟୋଲୋଜି ର ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ସେସନ ଆଜି କରିବା ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ 7:45 ରେ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଟା ହଉଛି ଫେଲ ହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଦେର ତ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ଓକେ ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ଏ କ୍ଲାସ ଟା ଚାଲୁଛି ଫାଇନାଲି କଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଶୁ ଥିଲା ଆଇ ଡୋंट हैव आइडिया आई एम नॉट अ टेकी यू नो सो व्हाटएवर इट मे बी क्लास स्टार्ट करिवा बायोलॉजी रो फर्स्ट चैप्टर हां एमएल करिवा नेक्स्ट या परे करिवा एटा एंड हला परे 8:30 आडू को आई थिंक स्टार्ट कर दवा एमएल टा तापर इंग्लिश भी आज करिवा हमर प्रोज विभाग बोली की भाबु छु ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन अछि बायोलॉजी एमसीक्यू रो जो माने भी जॉइन होचे संग मान सहित शेयर कर दवा जाफल से माने भी जॉइन नहीं पारिबे आउ एबे ही सेशन टा को टिके थम्स अप कर दवा माने लाइक कर दवा जाफल रे यू नो कोन भल लागियो सो फर्स्ट क्वेश्चन कोन refresher protein is produced by dash refresher protein is produced by dash option A regulator gene option B operator gene C structural gene and promoter gene these are the option refresher protein is produced by रिप्रेशर प्रोटीन कहा द्वारा प्रोड्यूस होता है पिले ऑप्शन अच्छी हम बगरे रेगुलेटर जीन ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रमोटर जीन ठीक उत्तर होची रिप्रेशर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर जीन ऑप्शन ए रेगुलेटर जीन होची ठीक उत्तर यस और नो सो रेगुलेटर जीन इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन नेक्स्ट क्वेश्चन होची आउट ऑफ 64 कोडन्स out of 64 codons only 61 codes for the 20 different amino acids and this character of genetic code is called ए जो genetic code रो character को कौन बोली कहा जाए पहले कौन बोली कहा जाए ऑप्शन ए degeneracy ऑप्शन बी नॉन एम्बिगुअस नेचर सी redundancy एंड डी overlapping कौन कहा जाए याको out of 64 codons only 61 codes for the 20 different amino acids this character of genetic code is called याको कौन कहा जाए what is the correct answer will tell pele this is called degeneracy option A this is called degeneracy option A परवर्ती प्रश्न देखिए what is the scientific name of the plant with which Mendel worked Mendel जहाँ सहित जो प्लांट को नहीं काम करथिले ताको हमें कौन बोली कहबा को प्लांट थिला सेटा ओइनेथेरा लामार्किना ओइनेथेरा मैंडलिना देन फाइशम सैटिवम एंड ओराइजा सैटिवा ये होची ऑप्शन बिले सो क्वेश्चन थिला व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट विथ व्हिच मेंडल वर्कड जहाँ सहित मेंडल काम करथिले ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन सी इट इज Pisum, Pisum, Sativum, Sativum. Pisum sativum होची सही प्लांट रोना मे बी प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम थाई भरे कारण बॉटनी रो प्रोनाउंसिएशन को मु माने इंग्लिश हिसाब रे करूची परवर्ती प्रश्न देखा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ताको कोन कहा जाए ऑप्शन ए वेरिएशन ऑप्शन बी सेग्रीगेशन ऑप्शन सी माइग्रेशन ऑप्शन डी होची हेरिडिटरी प्रश्न थिला द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तक कौन कहा जाए जनरेशन टू जनरेशन को जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए ताको हमें कौन बोली कहि थबरे ऑप्शन डी हेरिडिटरी होची तार ठीक उत्तर ताको कौन कहा जाए हेरिडिटरी बोली कहा जाए ऑप्शन डी टा होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न होची एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन organism is called externally observable characters of an organism is called but organism रो externally observable character को कौन कहा जाए ऑप्शन ए फेनोटाइप बी जेनोटाइप सी रिसेसिव डी डोमिनेंट फेनोटाइप जेनोटाइप रिसेसिव एंड डोमिनेंट ये होची चारिटा क्वेश्चन
कौन पिले ठीक उत्तर एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन ए फेनोटाइप तो कौन कह जाए फेनोटाइप फेनोटाइप बोली कह जाए फेनोटाइप होची ठीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परवर्ती प्रश्न अछि एलोगेमी ALLOGAMY एलोगेमी is best favored by allogamy is best favored by option A dichogamy B decliny C cleistogamy D hemogamy कौन बा ठीक उत्तर allogamy is best favored by option A dichogamy B decliny DICLINY C cleistogamy and D hemogamy ठीक उत्तर होची पिले इट इज डिकोगेमी ऑप्शन ए एलोगेमी इज बेस्ट फेवर्ड बाय डिकोगेमी ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज filiform apparatus which one of the following has filiform apparatus option A anther cell option B pollen grain option C synergids and option D spores ठीक उत्तर कौन which one of the following has filiform apparatus यार करेक्ट आंसर होची पिले synergids has filiform apparatus option C synergids होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन हला ट्रू फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रू फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम है कोड रहता है ऑप्शन ए पेडुनिकल ऑप्शन बी ओवरी सी थैलामस एंड डी पेडुंकल्स प्रश्नटी थिला ट्रू फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑप्शन ए पेडुंकल बी ओवरी सी थैलामस सी डी होची पेडुंकल्स ठीक उत्तर होची ट्रू फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी ऑप्शन बी होची ठीक उत्तर ओवरी ऑप्शन बी ओवरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परवर्ती प्रश्न लेंथ ऑफ mRNA that carries information for complete polypeptide synthesis is so length of mRNA that carries information for complete polypeptide synthesis is option A mutant option B codon option C operon option D होची cistern ठीक उत्तर कौन लेंथ ऑफ mRNA that carries information for complete polypeptide synthesis is option A mutant option B codon option C operon option D cistern ठीक उत्तर होची लेंथ ऑफ mRNA that carries information for complete polypeptide synthesis is cistern it is option D cistern नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परवर्ती प्रश्न बिले ग्रेटर द बॉड ऑफ सीवेज BOD कैपिटल ग्रेटर द बॉड ऑफ सीवेज वाटर इट्स polluting ability is dash greater the BOD of body of water sewage water its polluting ability is dash option A lower option B higher option C not effective and option D होची none of the above ठीक उत्तर कौन प्रश्नटी आउ थे कही दउची ग्रेटर द बॉड ऑफ सीवेज BOD water its polluting ability is option A lower option B higher option C not effective and option D none of the above and यार ठीक उत्तर होची it's not effective एटा effective ही नुह परवर्ती प्रश्न देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन
Ladybird beetle and dragonflies are useful to get rid of dash. Ladybird beetle and dragonflies are useful to get rid of dash. Option A, butterfly caterpillar. Option B, aphids. Option C, mosquitoes. Option D, both B and C. प्रश्न दिला ladybird beetles and dragonflies are useful to get rid of what? Aphids and mosquitoes. Ladybird beetles and dragonflies are useful to get rid of what? Aphids and mosquitoes. So both B and C. Both B and C is the correct answer. Option D is ठीक. Next question देखिए प्रवृत्ति प्रश्न. Wine and beer are produced. Wine and beer are produced. केमती produced? Option A, without distillation. B, with distillation. C, by distillation of fermented broth. And option D, from ethanol. प्रश्न थिला wine and beers are produced. ठीक उत्तर होची wine and beer are produced without distillation. बिना distillation रे produce होता है. बिना distillation रे produce होता है. So without distillation होची ठीक उत्तर. Next question देखियो. परवर्ती प्रश्न होची the keystone species. The keystone species in an ecosystem are those which option A are present in large number, B are most frequent, C attain a large biomass, option D OG contribute to ecosystem properties. प्रश्न थिला the keystone species in an ecosystem are those which ठीक उत्तर होची contribute to ecosystem properties, option D contribute to ecosystem properties. Next question देखिए. So plants with irreversible genetically fixed adaptation are known as plants with irreversible and genetically fixed adaptation are known as कौन को आ जाए? Option A ecotypes, B ecotons, C ecofins, option D ecological equivalent. ठीक उत्तर कौन? Which is correct? So plants with irreversible and genetically fixed adaptation are known as ecotypes. Option A होची ठीक उत्तर. शेष प्रश्न पचारुची. Last question 15 नंबर प्रश्न. शेष प्रश्न होची red data books are prepared by. Red data book कहा द्वारा prepared है था? Red data book are prepared by. Option A IUCN, B WWF, C IBWL and D none of the above. प्रश्न दिला IUCN सॉरी रेड डाटा बुक्स आर प्रिपेयर्ड बाय. अरे यार ठीक उत्तर होची रेड डाटा बुक इज प्रिपेयर्ड बाय IUCN. ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर. परवर्ती पर्याय पुणी देखा हबो एमआई ओडिया सहित नेक्स्ट क्लास रे सी यू देयर स्टेट मास्टर इंग्लिश. जय जगन्नाथ.